Here we are with the module 5 of the chapter 2, that is numerical problems. इस मॉड्यूल में हम कुछ numerical problems को solve करेंगे. Okay, so let's move ahead. Our first numerical is on the screen. So let's read it. Obtain an expression for the work done to dissociate the system of three charges placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown below. Okay, watch here. Obtain an expression for the work done. हमें work done के लिए एक expression find करना है to dissociate the system. इस system को dissociate करने में जो work लगा है of the three charges placed at the vertices of an equilateral triangle. ये एक equilateral triangle है जिसकी side है A. Right. हमें क्या find करना है? In three charges, ये charge, ये charge, ये charge. In three charges को dissociate करने में जो वर्क है उसको हमें फाइंड करना है. राइट. ओके, तो क्या करते हैं हम लोग इसको अपोजिट सॉल्व करते हैं. इसको किस तरह से हम ये फाइंड करेंगे कि ये चार्ज और ये चार्ज, ये थ्री चार्जेस को हम लोग प्रेजेंट लोकेशन में लाने में जो वर्क होगा उसको फाइंड करेंगे पहले. ओके, इन थ्री चार्जेस को, ये जो थ्री चार्जेस का सिस्टम है, इन थ्री चार्जेस को इस करंट लोकेशन या फिर प्रेजेंट लोकेशन में लाने में जो वर्क होगा वो इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा. राइट. सो वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी लाइक दिस. ओके, अगर टू चार्जेस का सिस्टम हो तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. U is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. ओके, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, टू चार्जेस सिस्टम के लिए. ऑलराइट, जिसमें टू चार्जेस हैं. ओके, यहाँ पर टू चार्जेस सिस्टम कितनी बार बन रहा है? एक ही बार ये, सेकेंड टाइम ये एंड थर्ड टाइम ये. इट मीन्स देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ चार्जेस. ऑलराइट, इन थ्री पेयर्स ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे. ओके, क्या करना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. ओके, सो लेट्स डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिस्टम की बात करते हैं. इसमें एक चार्ज है Q और दूसरा है -4Q. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, this is Q and this is -4Q. -4Q into Q becomes -4Q square upon the distance between them is A. Put here A. Right. Now let's talk about these two charges. The system of these two charges. One charge is Q, another is 2Q. 2Q into Q becomes 2Q square plus 2Q square upon A. Right. Now the third pair is -4Q into +2Q. In this pair of charges, the electric potential energy will be like this. What here? -4Q into +2Q. 4 to the 8 minus plus minus -8Q square. Right. So this will be -8Q square upon the distance between them is A. In this case A, and in this case A. In each case, the distance between the two charges, the distance between the two adjacent charges is A. Right, since it's an equilateral triangle. So this distance will also be A. Now this is the potential energy. The potential energy of the system means the energy or the work done to bring the charges from infinity to the present location. Right. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वो वर्क डन जो इन चार्जेस को इन्फिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में किया गया है, उस वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इसका रिजल्ट क्या आएगा देखिए जरा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ वॉच हियर. -4Q square and -8Q square. It becomes 8 plus 4
minus 12q square. Minus 12q square and plus 2q square. It becomes minus 10q square. So it would be minus 10q square upon A. Right? Or we can write it like U is equal to minus 10q square upon 4 pi epsilon naught into A. Okay, this is the potential energy. This is the potential energy of the system. Right? This is the potential energy of the system means ये वो एनर्जी या फिर वर्क डन है जो कि इन तीनों चार्जेस को इन्फिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन मिलाने में किया गया है. राइट? और हमें क्या करना है? हमें इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को, इस सिस्टम ऑफ थ्री ऑफ चार्जेस को डिसोसिएट करना है. डिसोसिएट मतलब इन सारे चार्जेस को वापस इन्फिनिटी पे भेजना है. राइट? आई मीन इन तीनों चार्जेस को वापस इन्फिनिटी पे भेजना है. तो किस तरह से होगा? ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ये वो वर्क डन है जो कि इनको इन्फिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में हुआ था. अगर हम इसको इतना ही वर्क पॉजिटिव में दे दें, ये नेगेटिव में, अगर इतना ही वर्क इसको हम पॉजिटिव में दें तो ये क्या होगा? वापस ये चार्जेस इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे मीन्स यहाँ से डिसोसिएट हो जाएंगे. राइट? तो किस तरह से वर्क डन क्या होगा? इनको डिसोसिएट करने के लिए वर्क डन होगा पॉजिटिव में 10q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A. ये वर्क वो वर्क है जो कि इनको इन्फिनिटी से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में किया गया है. अगर इतना ही हम पॉजिटिव वर्क इसको दे दें तो ये 0 हो जाएगा मीन्स तीनों चार्जेस इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे मीन्स यहाँ से डिसोसिएट हो जाएंगे. राइट? तो एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन विल बी दिस. Watch here. The work done will be is equal to positive 10q square upon 4 pi epsilon naught into A. This will be the value of work done. Alright? ये होगा वर्क डन. ओके, क्यों होगा? क्योंकि अगर इतना ही ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस 10q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A. अगर इतनी ही एनर्जी इसको दे दी जाए या फिर इतना ही वर्क इस पे कर दिया जाए तो क्या होगा? ये वापस इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा. ये सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस वापस इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे. इट मीन्स यहाँ से प्रेजेंट लोकेशन से क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएंगे. मीन्स दिस वुड बी द वर्क डन that we needed to find out. Right? Second numerical on the screen. This is 2-point charges 10 into 10 to the minus 8 coulombs and minus 4 into 10 to the minus 8 coulombs are separated by a distance of 70 centimeter. Means 2-point charges हैं यहाँ पर 10 into 10 to the minus 8 coulombs and minus 4 into 10 to the minus 8 coulombs is separated है by a distance 70 centimeter in air. Air में रखे. Find at what distance from the first charge से कितनी distance पर would the electric potential be 0? Electric potential 0 होगा. And also calculate the electrostatic potential energy of the system. हमें इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच हियर. सबसे पहले क्या करना है हमें? ये टू चार्जेस प्लेस्ड हैं एट अ डिस्टेंस 70 centimeter. 70 centimeter means 0.7 meter. So let's put them. This is the first charge. This is the second charge. First is 10 into 10 to the minus 8 coulombs and the second one is minus 4 into 10 to the minus 8 coulombs separated by a distance 0.7 meter. Okay, what we need to do, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी 0. फर्स्ट चार्ज ये है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल 0 होगा. ओके, सो लेट अस अज्यूम दिस इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एंड इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज. ये एक पॉइंट है जो कि पहले चार्ज को मैं A कह देता हूँ, सेकेंड वाले को B कह देता हूँ. ओके, पहले चार्ज से x डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा
A and B की वजह से, इस system of charges की वजह से. Okay, so this remaining distance would be 0.7 minus x. Okay, now what we need to do, we have to find out at what distance. ये हमने assume किया x. So A से x distance पर एक point है जहां पर A and B की वजह से resultant potential 0 होगा. Okay, A की वजह से potential find करेंगे यहाँ पर, B की वजह से potential find करेंगे यहाँ पर, और इसका resultant होगा 0, और resultant 0 इक्वल करके A and B की वजह से potential की वैल्यूज पुट करके हम लोग x फाइंड कर लेंगे. ओके, क्या कंडीशन है देखिए. At this point, the potential due to A, let us take at this point the potential due to A is VA, and at this point the potential due to B is VB. A की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल VA है, B की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल VB है. ओके, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0. देन VA प्लस VB इज इक्वल टू 0. इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल 0 है. ओके, इसी को हम इस वे में भी राइट कर सकते हैं. VA इज इक्वल टू माइनस VB. अब क्या करेंगे? अब VA एंड VB की वैल्यूज पुट करेंगे और x फाइंड कर लेंगे. ओके, लेट्स वॉच. VA इज इक्वल टू माइनस VB. VA एंड VB की वैल्यूज पुट करने वाले हैं. ओके, VA की वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught into charge is 10 into 10 to the minus 8 upon the distance is x. This, the distance between the point and the charge, is equal to VB minus VB. So this is minus 1/4 pi epsilon naught into the charge is minus 4 into 10 to the minus 8, and the distance is this 0.7 minus x. So this is 0.7 minus x. All right, so watch here. This negative sign and this negative sign multiply to give positive sign. All right, so this negative and this negative becomes positive. Now this 1/4 pi epsilon naught is cancelled out by this 1/4 pi epsilon naught, like this. All right, and this 10 to the minus 8 is cancelled out by this 10 to the minus 8, like this. All right, now we have 10 upon x is equal to 4 upon 0.7 minus x. 0.7 minus x. Okay, we will solve this to get the value of x. So let's solve this. Let's cross multiply. So this becomes 10 into 0.7 becomes 7 minus 10x is equal to 4x, or we can write it like 7 is equal to 14x, or x is equal to 7 by 14, or 0.5 meter. So फर्स्ट चार्ज से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा. ओके, फर्स्ट चार्ज यानी कि 10 into 10 to the minus 8 कूलम से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस 0 होगा. नाउ द सेकंड पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है हमें. ओके, वो क्या होती है? वॉच हियर. The formula for the electric potential energy is U is equal to
1 upon 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 upon R. Okay, so these are the two charges, Q1 and Q2, and R is the separation between the charges. Okay, so put the values. The value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the 9. The value of the first charge is this, 10 into 10 to the minus 8, into the value of the second charge is, and we are taking just magnitude, all right? We will take just magnitude, so this is 4 into 10 to the minus 8 upon, the separation is 0.7. Okay, let's calculate this, and we will have the value which will be 5.1 into 10 to the minus 5 joules. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि 5.1 into 10 to the minus 5 joules. Right? This is the answer for the second part. Okay. The electrostatic potential energy of the system will be 5.1 into 10 to the minus 5 joules. Next numerical on the screen, and this is calculate the potential difference and the energy stored in the capacitor C2 in the circuit shown in the figure. Given potential at A is 90 volt, C1 20 microfarad, C2 30 microfarad, and C3 15 microfarad. Okay, watch here. हमें find करना है potential difference. Calculate the potential difference. Potential difference find करना है and the energy stored. Potential difference and energy stored find करना है किसमें? In the capacitor C2. इस capacitor में. In the circuit shown in the figure. Given. क्या given है? Potential at A. A पर potential given है, that is 90 volt. C1 is 20 microfarad, C2 is 30 microfarad, and C3 is 15 microfarad. और यहाँ से ये ground है. Okay. So क्या करना है हमें? C2 के लिए potential difference and energy stored find करना. Okay. क्या करेंगे उसके लिए? देखिए ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं. ओके, तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं. ए को हमने पोटेंशियल दिया है 90 वोल्ट. ए को जो हमने पोटेंशियल दिया 90 वोल्ट वो इन तीनों कैपेसिटर्स में ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, 90 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो C1, C2 एंड C3 में ड्रॉप हो जाएगा. C1 में पोटेंशियल ड्रॉप, C2 में पोटेंशियल ड्रॉप एंड C3 में पोटेंशियल ड्रॉप. इसका जो सम होगा वो इक्वल होगा ए पर पोटेंशियल के, जो कि हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, दैट इज 90 volt. Means it would be like the potential provided V is equal to the potential drop in C1, the potential drop in C2, and the potential drop in C3. The sum of the potential drops in C1, C2, and C3 will be equal to the total potential provided to A. Right? इन तीनों में जो potential drop होगा वो equal होगा net potential के, जो कि हमने A को provide किया है, that is 90 volt. तो क्या करने वाले हैं, ये जो प्रोवाइड किया है उसको 90 वोल्ट लिखते हैं, दैट इज गिवन हियर. ए पर 90 वोल्ट है एंड V1 मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 में पोटेंशियल ड्रॉप. ओके, द फॉर्मूला फॉर V इज Q अपॉन C, तो इसको हम लिख देंगे Q अपॉन C1. V2 को लिख देंगे Q अपॉन C2 एंड V3 विल बी Q अपॉन C3. Okay, what are we doing? We are taking the charge as constant. चार्ज हम लोगों ने कांस्टेंट लिया है. क्यों? सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी में चार्ज इक्वल होता है. ऑलराइट, चार्ज कांस्टेंट रहता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इज इक्वल. ऑलराइट, नाउ put the values of these C1, C2 and C3. These are given here. Okay, so put the values. 90 is equal to Q कॉमन ले लीजिए, so this will be 1 upon 20 plus 1 upon 30 plus 1 upon 15. Alright, now what are we going to do? And these all are in microfarad.
ये सारे के सारे कैपेसिटेंसेस माइक्रोफैरड में. Okay, micro means 10 to the minus 6. All right, so here this will be 20 into 10 to the minus 6. This will be 30 into 10 to the minus 6. This will be 15 into 10 to the minus 6. Or we can write it here. हम 10 to the minus 6 कॉमन ले लेंगे like this. Okay, सभी में से हम लोगों ने 10 to the minus 6 कॉमन ले लिया और इसको बाहर लिख लिया. Okay, now let us calculate the value of Q. Let us calculate the value of Q. Okay, 90 is equal to Q. Take the LCM and the LCM will be 60. This will be 3 and here will be 2 and here will be 4. Take this 10 to the minus 6 in the numerator. इस 10 to the minus 6 को numerator में लेके आएंगे और ये हो जाएगा 10 to the plus 6. Okay. Now we can solve this to find the value of Q. Okay, and this will be 90 is equal to Q 9 upon 60 into 10 to the 6. So 9 tens are 90 and the value of Q will be 6 into 10 to the 4. 6 into 10 to the minus 4 coulombs. Alright. इसको हम solve करेंगे Q के लिए and the value of Q will be 6 into 10 to the minus 4 coulombs. Okay, so we have the value of Q. Requirement क्या है यहाँ पर देखिए. We have to find out the potential difference and energy stored in the capacitor C2. C2 में हमें potential difference find करना है and energy stored find करना है. Okay, अब हम potential find करते हैं. Watch here. C2 में potential find करेंगे. V2 is equal to Q upon C2. Alright, potential across C2. C2 में potential है V2 is equal to Q upon C2. Q तो सभी के लिए same है because all the capacitors are in series. So put the value. The value of Q is 6 into 10 to the minus 4 upon the value of C2 is 30 microfarad, means 30 into 10 to the minus 6. Alright, so this will be, when we will solve this, we will get the value of V2 as 20 volt. So the potential across the capacitor C2 is 20 volt. C2 के across potential जो है वो 20 volt है. Now what we need to calculate the energy stored in the capacitor C2. C2 में energy कितनी store है ये भी हमें find करना है. Okay, ये भी हम कर सकते हैं. C2 में energy find करने के लिए formula लगाएंगे. Energy stored in C2, U is equal to half CV square, or for C2 it will be half C2 V2 square. Alright, energy stored in the capacitor C2 will be U is equal to half C2 V2 square. Okay, now put the value. The value of C2 is 30 microfarad, means 30 into 10 to the minus 6, and the value of V2 we just have calculated. हमने अभी calculate किया V2 की value, that is 20. Okay, now we will solve this to get the result for the energy stored, and that will be
60 into 10 to the minus 4 joules. राइट, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी विल गेट 60 into 10 to the minus 4 joules. ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2. तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 फाइंड किया एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2 फाइंड किया. राइट, our next numerical on the screen, this is find the equivalent capacitance of the network shown in the figure when each capacitor is of 1 microfarad. यहाँ पर एक ये नेटवर्क बना हुआ है जिसमें कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं C1, C3, C5, C2 एंड C4. राइट, क्या करना है हमें? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर. ये जो नेटवर्क शोन है जिसमें कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें. ओके, एक्स एंड वाई के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है. द नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन द ends x and y are connected to 6 volt बैटरी. जब ये x and y को हम कनेक्ट कर देते हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी से. ओके, x and y को कनेक्ट कर देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, तब क्या करना है? फाइंड आउट द चार्ज एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क. उस कंडीशन में जब ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, हमें फाइंड करना है चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क. उससे पहले हमें क्या करना होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है इस नेटवर्क का. इस नेटवर्क का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं. ओके, वॉच हियर. इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इस नेटवर्क को हम इस फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं. दिस C1 एंड C3, वी कैन मेक देम लाइक दिस, C1 and C3, and this C2 and C4 like this, C2 and C4, C2 and this is C4. Okay, now this one, the middle one C5, this will come here, C5. Okay, now watch here. ये एक वीट स्टोन ब्रिज बन गया है यहाँ पर. ओके, वीट स्टोन ब्रिज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर इसका थोड़ा सा यूज है, वी विल सी हियर. बाकी का हम लोग वीट स्टोन ब्रिज को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, मीन नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, वॉच हियर. अगर इस तरह का ये सेटअप है, 5 कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो हम इससे ये नेटवर्क बना सकते हैं. ओके, और अगर इसमें ये एक वीट स्टोन ब्रिज है. ओके, इसको बोलते हैं वीट स्टोन ब्रिज. अगर C1 एंड C3 का रेशियो C2 एंड C4 के रेशियो के इक्वल हो तो ये एक बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज होगा एंड C5 में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा. ओके, लेट अस चेक इट आउट. C1 अपॉन C3 और यहाँ पर C2 अपॉन C4. ओके, एज इट इज गिवन, ये गिवन है कि ईच कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफैरड. हर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का, मींस C1 भी 1 माइक्रोफैरड, C3 भी 1 माइक्रोफैरड, C2 भी 1 माइक्रोफैरड एंड C4 भी 1 माइक्रोफैरड. 1/1 इज इक्वल टू 1/1 मींस ये रेशियो इक्वल होगा. जब ये रेशियो इक्वल होगा इसका मतलब क्या है? C1 एंड C3, C2 एंड C4, ये रेशियो इक्वल होने की वजह से क्या हुआ? व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया एंड C5 में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो C5 ब्रांच को हम डिलीट कर देते हैं. इस ब्रांच को हम लोगों ने डिलीट कर दिया. ओके, अब हमारे पास क्या बचा? ये यहाँ से X कनेक्ट है, ये यहाँ से Y कनेक्ट है. ओके, नाउ यहाँ से वी कैन सी these two capacitors are in series. ये दोनों सीरीज में है. ओके, C1 एंड C2 सीरीज में. यहाँ पर बॉटम में C3 एंड C4 सीरीज में. ओके, तो C1 एंड C2 इन दोनों के सीरीज में होने की वजह से इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, तो क्या हो जाएगा? इस तरह से. ओके, C1 एंड C2 ये दोनों 1 माइक्रोफैरड है, इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड करेंगे और यहाँ प्लेस करेंगे. ओके,
1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा हाफ माइक्रोफैरड। ओके, इसी तरह से C3 एंड C4 ये कनेक्ट है सीरीज में, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, इनका भी रिजल्टेंट हो जाएगा हाफ माइक्रोफैरड। ओके, नाउ वॉच हियर, ये हाफ माइक्रोफैरड एंड ये हाफ माइक्रोफैरड ये आपस में पैरेलल में है। ओके, पैरेलल में है तो इनका कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, डायरेक्ट ऐड करके। ओके, सो द रिजल्टेंट C will be half microfarad plus half microfarad is equal to 1 microfarad, means resultant capacitance भी आ गया 1 microfarad, means इस सिस्टम का I mean इस नेटवर्क का resultant capacitance आ गया 1 microfarad। okay, 1 microfarad is the resultant capacitance। okay, तो ये काम हो गया हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब क्या करना है, when each right when the ends x and y are connected to 6 volt battery, अगर क्या किया जाए, अगर इन ends x and y को कनेक्ट कर दें 6 वोल्ट की बैटरी से, इस तरह से 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, तब फाइंड करना है, फाइंड आउट द चार्ज एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। ओके, इस कंडीशन में चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला होता है चार्ज के लिए, Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आई मीन फाइंड कर चुके हैं 1 माइक्रोफैरड एंड V गिवन है 6 वोल्ट। ओके, पुट द वैल्यूज, फाइंड द आंसर, वॉच हियर, Q इज इक्वल टू CV, Q is equal to CV। C की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, मींस 1 into 10 to the minus 6, and the value of V or the value of the potential here is 6 volt। इसको पुट कर दीजिए 6, so this will be 6 into 10 to the minus 6 कूलम। ओके, या फिर 6 माइक्रो कूलम, चार्ज की वैल्यू आ गई 6 माइक्रो कूलम। ओके, ये काम हो गया, चार्ज फाइंड हो गया। अब क्या करना है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, इस नेटवर्क में हमें एनर्जी स्टोर्ड भी फाइंड करनी है, जबकि ये 6 वोल्ट की बैटरी से इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, 6 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है, तब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एनर्जी भी फाइंड करनी है। ओके, कैसे फाइंड करेंगे एनर्जी, एनर्जी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो करते हैं, U is equal to half CV square। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, मींस 1 into 10 to the minus 6। V की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट, मींस 6 स्क्वायर, so this will be half 10 to the minus 6 and this will be 36, or it will be 18 into 10 to the minus 6 joules। So the value of energy stored is 18 into 10 to the minus 6 joules। ये हो गई हमारी एनर्जी की वैल्यू। ओके, तो हमने चार्ज फाइंड किया, एनर्जी स्टोर फाइंड की, और कैपेसिटेंस नेटवर्क का पहले ही फाइंड कर लिया था। राइट, so this is the energy stored in the network। That's all for now, see you again, thank you।